Hello learners, I welcome you all to this English class. I welcome all plus 2 secondary students of Arts, Science and Commerce of Odisha, those who are studying under CHSE pattern. Previously, we have discussed the poem Daffodils and we have discussed the summary and we have discussed the answers of the questions at the end of the poem. But these questions may not come in the exam. You know, some extracts are coming in the exam. So today let's discuss some of the extracts of the poem Daffodils. We may take 2 to 3 extracts from this poem and we will answer them with our audio version. And this will enable us to answer all the questions in the exam. Yes, those who haven't subscribed our channel, they can subscribe to get language classes English and Odia. So come, let's discuss them on our mobile screen. Now students, we are going to answer some questions from the extracts which have been asked in the previous board exams. Here is an extract from Daffodils. We will read the extract first. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flush upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Well students, we have discussed this poem previously. Now we are going to answer some questions that present here. ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ପଛରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। Question 1. What is the similarity between the stars and the daffodils? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଡାଫୋଡିଲ୍ ଆଉ ତାରକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମାନତା ରହିଛି। କ'ଣ ସମାନତା ରହିଛି? ତାରକାମାନେ ଛାୟା ପଥରେ ରହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚକମକ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଡାଫୋଡିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପସାଗରର ଧାରେ ଧାରେ ଅଗଣିତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପି ରହି ପବନରେ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ମଥା ପିଟୁଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାରକା ଓ ଡାଫୋଡିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା। ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଦି ଷ୍ଟାର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଅନ୍ ଦ ମିଲ୍କି ୱେ and according to the poet, daffodils stretch continuously along the margin of the way and they flutter and toss their heads in the breeze. This is the similarity between the stars and the daffodils. Question number 2. Where did the poet see the daffodils? अर्थात कवि केउंठी daffodil फूल गुड़िक देखिले? आम कहीपर कवि एक ह्रद पार्श्वर एवं गछ मान तले पवन में फड़फड़ करुवा नृत्य करुवा daffodil फूल गुड़िक देखी। आम आंसर लिखा दि पोएट सॉ द daffodils beside the lake and under the trees which were fluttering and dancing in the breeze. Question number 3. What impact did the dancing daffodils have on the poet? अर्थात नृत्य करुवा daffodil फूल गुड़िक कवि कि प्रभाव पकई? आम कहीपर कवि ये डांसिंग daffodil फूल द्वारा गभीर भाव में प्रभावित होते। यह एक संपद भली थिला। से फूल मान गहन अत्यंत आनंद विभोर हो जाते। आम आंसर लिखा दि पोएट वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द डांसिंग daffodils. इट वाज एज इफ ए ग्रेट वेल्थ फॉर हिम. ही गॉट immense pleasure with the jocund company of the daffodils. Question number 4. In such a jocund company, what constitutes the jocund company? अर्थात आम बुझा ये jocund company किए सम्मिश्रण करथिला। आम बुझा जे उपसागर कूले कूले लंबी रही से गोल्डन daffodil गुड़िक पवन में नृत्य करुले एवं पवन में मुंड पिटुले। समुद्र ढेउ को से बड़ी जाऊे। यह कवि एक आनंदमय मुहूर्त सृष्टि करथिला। आम आंसर लिखा दि daffodils stretched in a never ending line by the margin of a bay. The poet was impressed by this grand sight. This constituted a jocund company for the poet. They flash upon that inward eye. What does inward eye imply? एठारे inward eye कौन सूचित करे? एठारे inward eye कवि अंतर्दृष्टि को वर्णना करे। अर्थात आखि जहाँ देखे ताठारू कल्पनार नेत्र किसी अलग कथा कल्पना करे। एठारे इनवर्ड आए कवि अवचेतन मस्तिष्क को सूचाऊँ। कवि जिते घरे सोफा पर बसी रही से सुनेली रंगर नाच करुवा गोल्डन daffodil फूल गुड़िक कवि कल्पना नेत्र में भासी उठती। यह ही कवि
इनवर्ड आई को सूचित करे आम लिखा इनवर्ड आई रेफर्स टू द सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट दिस इज द रेफरेंस टू द पिक्चर formed in the mind rather than what the eyes see. When the poet sits lying on his couch, the daffodils flush upon his inward eye and give him immense pleasure. Now students, we are going to answer some questions that came in 2016 annual for art students taking the same extract. Question number 1. What resemblance between the daffodils and the stars does the poet speak of? प्रश्नटी को आम बुझा कवि डाफोडिल और तारका मान मध्य कौन सामंजस्य थिबा कथा कहती आम उत्तर बुझा तारका गुड़िक जमी काउंटलेस डाफोडिल गुड़िक सेमती काउंटलेस भाव उपसागर धारे धारे व्यापी जाइए यह ही उभय मध्य सामंजस्य आम कह उत्तर दि स्टार्स आर काउंटलेस सिमिलरली द डाफोडिल्स स्टेज कंटिन्यूअसली along the margin of the bay. The poet speaks of this resemblance between the daffodils and the stars. Question number 2. How many flowers did the poet see and where did he see them? प्रश्नटी बुझा कवि केते संख्यक डाफोडिल देखिले एवं सेगुड़ी से केउंटी देखिले आम उत्तर कहवा कवि 10,000 डाफोडिल फूल देखिले एवं सेगुड़ी एक ह्रद पार्श्वर थिबार देखिले उत्तर हम दि पोएट सॉ 10,000 daffodils implying a vast multitude and he saw them by the side of a lake. Question number 3. Which sight, the sight of the dancing flowers or the dancing waves impressed the poet more? आम प्रश्नटी बुझा फूल मानकर नृत्य करुवा दृश्य ना लहरी माने नृत्य करुवा दृश्य केउंटी कवि को विमोहित करथिला आम कहीपर फूल मानकर नृत्य करुवा दृश्य कवि को अधिक विमोहित करथिला आम कहबा द साइट ऑफ द डांसिंग फ्लावर्स इम्प्रेस्ड द पोएट मोर. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड ए जैकन कंपनी इम्पैक्ट द पोएट अर्थात जैकन कंपनी अर्थात आनंददायक सहचर कवि ऊपर किपरि प्रभाव विस्तार करथिले आम कहबा अगणित फूल मानकर नृत्य करुवा दृश्य अन्य पक्षरे लहरी मानकर नृत्य करुवा दृश्य कवि को विशेष भाव में प्रभावित करे से आउ किसी चिंता करि पारंतिनी जहाद्वारा से निर्वाक होई एक लय से फूल गुड़ी को चाहि रहंती आम उत्तर लिखा काउंटलेस डांसिंग डैफोडिल्स मेक द पोएट मोर इम्प्रेस्ड एंड ही गेट्स इमेंस प्लेजर व्हिच मेक्स हिम स्पीचलेस एंड ही गेजेस द मार्वेलस साइट इन साइलेंस. क्वेश्चन नंबर 5. दे फ्लैश अपन दैट इनवर्ड आई हु फ्लैश अपन व्हाट कौन झलसी उठे कहाँ पाखरे आम कहीपर कवि मन भितर डाफोडिल फूलर से सुंदर दृश्य झलसी उठे जितेबाला से सोफा उपरे पड़ी रही था आम कहीपर आंसर द ग्लोरियस साइट ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स फ्लैश अपन द पोएट्स इनवर्ड आई व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच. Here the inward eye is the poet's imagination which brings the remembrance of the golden daffodils. The learners, so far we have discussed some of the extracts from our poem Daffodils. So thank you for watching this video class. Bye bye.